मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल आर फाइन। ठीक है, चलो आज हम है ना लेसन नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों ने बोला था कि मैम थोड़ा सा ही पढ़ा है, तो फिर मैं वापस से पूरा लेसन बता देती हूँ। हम 14 लेसन में पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें जो भी रिसोर्सेज मिले हुए हैं, जैसे कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है? स्रोत। स्रोत का मतलब होता है कि जो हमारे का दिन डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें काम आती है, चाहे वो नेचुरल है चाहे मैन मेड है, वो हम उनको कैसे हम उनको संभाल के रख सकते हैं, प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? संभाल के रखना। कंजर्वेशन मतलब कि उसको इकट्ठा करके रखना, उसको एक जगह पे एकत्रित करके रखना। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स स्रोत। नेचुरल सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ एंड यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। अंडरलाइन कर लीजिए। नेचुरल सब्सटेंस यानी कि जो भी प्राकृतिक रूप से जो भी हमें चीज़ें जो धरती पर मिली हुई होती है, वो क्या जो भी यूजफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, वो क्या कहलाती है? रिसोर्सेज कहलाती है। नेचुरल रिसोर्सेज आर अ नेचुरल गिफ्ट वी रिसीव इन द फॉर्म ऑफ एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड मिनरल्स। अंडरस्टूड? रिसोर्सेज आर द बैकबोन ऑफ द नेशनल इन इकोनॉमी। रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे जो राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। यानी कि उनसे जो हमें ना बहुत सारी जो चीज़ें प्राप्त होती है, जैसे कि वाटर्स है, प्लांट्स है, मिनरल्स है, इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, दे आर द पिलर ऑफ द power and prosperity of people. Resources have specific features and utilities. Generally, resources are available in limited quantity. We should use different techniques to make those resources more useful. Types of resources. Resources are useful to us in many ways, directly or indirectly. Natural resources are useful to us in all activities, taking from agriculture to industry and transportation. Natural resources such as vegetation and land are useful to us in the form of food, fuel and energy. समझ में आया? नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो वेजिटेशंस में काम आता है, यानी प्राकृतिक रूप से काम आता है। लैंड रिसोर्सेज किस लिए काम आता है? उसमें हमें क्या मिलता है, किस रूप में मिलता है? खाने के रूप में मिलता है, ईंधन के रूप में मिलता है और एनर्जी ऊर्जा के रूप में हमें मिलता है। Resources are generally divided into two groups, underline, natural and man-made. वो भी मैंने आपको बताया था। Land, water, minerals and forest are included in natural resources, underline. It also falls in two categories, biotic एंड एबायोटिक। ये मैंने आपको जो है अपन लोगों ने सैम 1 में पढ़ रखा है। लैंड, एयर, वाटर एंड सॉइल आर एबायोटिक, वेर एरियाज, फॉरेस्ट एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। इंडस्ट्रियल यूनिट्स, मॉन्यूमेंट्स, आर्ट्स एंड social institution are man-made resources. Human resources include knowledge, intelligence, skills, health and other qualities found in human beings. For the development of natural resources, human resources is necessary. यानी जितने भी human resources है, लाइक जैसे कि मॉन्यूमेंट्स है, आर्ट्स है, सोशल इंडस्ट्रीज़ है ना, उन सबको बनाने के लिए क्या ज़रूरत होती है? नॉलेज की, स्किल्स की, इंटेलिजेंस की, है ना, उन सब की ज़रूरत होती है। देयर आर सम रिसोर्सेज विच रिप्लेनिश देमसेल्व्स। रिप्लेनिश का मतलब जो खुद से बनते हैं। ट्रीज, लीव्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स रिन्यूअल नेचुरली। रिन्यू यानी वो मतलब उनका डेवलपमेंट खुद से होता है। दिस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कीप रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स एट अ सर्टेन टाइम्स। ये मतलब जैसे कि रिप्रोड्यूस खुद से होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड वाइल ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड. The use of resources has greatly increased over the last few years due to advanced technological development and population exploitation. If we do not think seriously about this situation, we will have to suffer adverse consequences. That is why it is the duty of all us to preserve resources for future generation. Conservation of resources means the judicious use of the resources. Some resources either replenish their share on their own or they are unlimited. Such resources are known as renewable resources like forest, sunlight,
Non-renewable resources are those which cannot be reused and recreated once it is used, such as petroleum, minerals, coal, and natural gas resource, land resource, water resource, forest resource, agriculture resource, animal wildlife resource, mineral resource. In addition to this, the human beings is also resource. They are also classified based on ownership of resource, retrieved distribution of the resources, land resources, सॉइल फॉर्मेशन. अब लैंड रिसोर्सेज में हम सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे. सॉइल फॉर्मेशन आपको मैंने पहले भी मिट्टी के कटाव, मिट्टी की जुड़ाव, मिट्टी कैसे हमें यूज़ आती है, क्यों उसका करना जो है जुड़ा होना बाकी है, वो के बारे में हम पढ़ेंगे. सॉइल फॉर्मेशन. द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज सरफेस ऑफ ऑन विच वेजिटेशन यूजुअली ग्रो is called soil. The soil is a thin layer made up of many particles on the earth crust. So small the large piece of rock, gravel, clay, organic slit are called regolith. Regolith का मतलब कि मिट्टी के जो टीले होते हैं ना, उसको regolith बोलते हैं. In the it organic elements, air and water are mixed and soil it formed. It contacts to farming. The economic development of any country depends on the quality and type of soil it has. Type of soils. The Indian Council of Agriculture Research ICAR has classified the Indian soil into 8 types: alluvial soil, red soil, black soil, lateritic soil, desert soil, mountainous soil, forest type soil, and swamp type soil. Soil erosion and conservation. Soil erosion is caused by flowing water or air. The rapid migration of topsoil particles by natural forces is called soil erosion. Due to this, agriculture productivity of soil is reduced. It should be prevented. मिट्टी का कटाव जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पानी और हवा के बहाव से जो है उसका कटाव ज़्यादा होता जा रहा है. उससे हमें बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, खेती जो है वो एग्रीकल्चर को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. मेजर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन फैलो लैंड. अंडरस्टूड. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए. स्टेप फार्मिंग शुड बी डन वेयर देयर इज स्लोपिंग लैंड. जहाँ पे ढलान वाली जगह है वहाँ पे हमें स्टेप फार्मिंग करनी चाहिए. द बैरियर शुड बी बिल्ड. ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ ऑन लैंड शुड बी कंट्रोल्ड. लैंड कंजर्वेशन. लैंड कंजर्वेशन means maintaining soil quality by preventing soil erosion. Grow trees on river ravines and mountainous slopes to prevent wind gusts in the areas close to the desert. Grow rows or of trees. Uncontrolled grazing should be prevented. The organic matter should be added to the soil, which has lost its fertility. Thus, collaborative effort should be carried by the all together. देखिए, लैंड कंजर्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है वो पेड़ उगाने चाहिए रिवर नदी के किनारे पे, जिससे क्या हो कि वहाँ पर मिट्टी का कटाव कम हो सके, और जो भी रेतीली जगह है उसको जो है वो ढका जा सके. जितनी भी घास वाली जगह है उसको कंट्रोल करना चाहिए, और उसके बाद मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनानी चाहिए. Water resources. The amount of potable water on the growth is about 3%. On third of the earth is covered by water. Water is a precious gift from nature. Water is a very useful source for basic daily human activities, industries, and agriculture. Water resource includes oceans, bays, rivers, lake, groundwater, etc. Rain is the main source of water resource on the surface of earth. All sources are attributed to rainfall. Surface water sources include rivers, lakes, ponds, springs, etc. Among them, river is considered to be the main source. वाटर रिसोर्सेज आपको पता है कि पानी है,
घाटियाँ हैं, मतलब खाड़ी है, नदियाँ हैं, पॉन्ड्स है ना, लेक है, उन सब से हमें पानी मिलता है। पर मेन रिसोर्स क्या है? बारिश है। बारिश से हमें मिलता है। और फिर हमें जो है धरती का, हमें जो अर्थ है, अर्थ की जो सरफेस है, यानी अर्थ से की जो सरफेस जितनी सॉलिड होगी, पानी उतना ज़्यादा कंज्यूम होगा, और पानी को हमें संभाल करके रखना चाहिए। वाटर स्कैरसिटी, वाटर की जो स्कैरसिटी है, वाटर जो कम हो रहा है, वो किस रीज़न से हो रहा है? वाटर इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम नेचर। अंडरलाइन the growing demand for food, for the growing population, for growing cash crops, increasing urbanization and high living standard have resulted in increasing demand for water. Understood? Water is also required for cleaning the dirt. Currently, the crisis of water scarcity is increasing in many parts of our country. A shortage of drinking water is observed. At present, the groundwater level has dropped since groundwater is exerted through tube wells. Today, country is facing serious problems like declining availability and increasing scarcity of water. आज की डेट में हमारे देश में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस प्रॉब्लम खड़ी हो गई है पानी की कमी को लेकर के। इसलिए बोला जाता है ना, पानी बचाओ, है ना। मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। टुडे अ लिमिटेड amount of water is available. Polluted water is a great problem, so prudent water and measure to maintain it is very necessary. Water is our shared resource for water preservation. Common remedies should be done necessarily, such as build more and more reservoirs, make efforts to bring groundwater level up. Harnessing flowing river water measures should be also taken to stop and collect rainwater, such as constructing dam, recharge wells, farm ponds, etc. Apart from this, bring awareness and increase public participation in water conservation. Understood? हमें लोगों को जागृत करना पड़ेगा कि भाई पानी बचाओ। पानी को बचाने के लिए जो जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है उनको एजुकेटेड करके उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। और पानी को कंज्यूम करना पड़ेगा। वाटर शुड बी यूज separately in gardens and toilets. Protect reservoirs and rivers from pollution. Unit which use groundwater should be monitored. और जो ग्राउंड वाटर यूज़ हो रहा है उसको देख रेख करनी पड़ेगी। Mineral resources. Years ago, human beings used tools made of stone for hunting. बहुत पुराने समय में लोग जो है शिकार करने के लिए क्या करते थे? जो पत्थर के जो औजार होते थे, पत्थर के जो हथियार होते थे, वो काम में लेते थे। दिस मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड मिनरल्स इज़ वेरी ओल्ड एंड क्लोज। The stages of human development in human culture are known by the name of minerals, such as Stone Age, Copper Age, Bronze Age, Iron Age. Present time is called an Atomic Age. The importance of minerals has increased a lot after the Industrial Revolution. India has enough minerals resources to keep pace with the rest of the countries of the world. हमारे देश में इतना सारा मिनरल्स है, यानी कि इतने सारे जो लोह इस्पात है कि वो और दूसरे पूरे वर्ल्ड के देशों को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। मिनरल कंजर्वेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, extreme consumption of natural resources has reached its pinnacle after the industries revolution. So there is a danger of exhaustion some minerals resources used extensively today. Minerals such as petroleum products are on the verge of exhaustion. Hence, mineral resources should be used very judicially. Its conservation is also a kind of saving. It is also important to find an alternative to the minerals that are one of the world's extinction. Where it is possible, a process should be done to recycle minerals, forest and wildlife resources. Human existence and progress are attributed various resources. We have been fulfill
our various needs by taking various things from nature. Among these, forests are very important resource, and wildlife is also unique and diverse. Great importance is given to the forest in the Indian culture. Importance of forest. अब forest की importance पढ़ेंगे. Forests are useful to us in many ways. Teak and sal wood is used as timber, home furniture, etc. are made from it. Sports articles are made from kedar and pine. Basket, paper, rayon, etc. can be made from bamboo. We get liqueurs, glue, honey, herbs, etc. from forest. Forests provide livelihood to the people living in it. Along with the economic importance, the environmental importance of the forest is also special. Forests retain moisture by preventing climate from being adverse. Moreover, it is useful to bring more rainfall. It is also helpful in conserving groundwater level and prevents soil erosion. It helps in maintaining the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. अंडरस्टूड. ये तो आपको पता है कि इसकी फॉरेस्ट की ज़रूरत क्यों होती है, फॉरेस्ट किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है. The forest cover in India is very less. The largest forest over are in the Andaman and Nicobar Islands, as well as in the state of Mizoram, Manipur, Tripura, and Arunachal Pradesh. The forest over in mountainous region of the northeast is more than 60% according to the report State Forest Department 2017-18. Out of the total areas of Gujarat, forest cover is 11.18% according to the National Forest Policy. 33% of the total land area should be covered by the forest. यानी हमारे गुजरात का जो है 11.18 according to the National Forest Policy covered है. The forest cover in India is only about 23%. Forest conservation. Today, forests are disappearing rapidly. Decreasing forests have become a major problem in the world. There are many reasons for deforestation. Due to greediness of man to get land, raw material for industries, timber, urbanization, etc., forests are decreasing rapidly. Due to haphazard destructions of forest. Haphazards का मतलब लगातार कटाई होना. The environmental has suffered some adverse consequences. Increase in populations, decrease in rainfall, droughts, soil erosion, and endangered wildlife and their reducing numbers, increase in global temperature, destroying natural beauty, etc. The Constitution of India states that the prime duty of a citizen is to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to show compassion to living beings. Forest and wildlife are also protected by law. There is also a provision for punishment. ठीक है, तो यानी कि ये ऐसे कुछ लॉ बनाए हुए हैं जिससे कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं. सम ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेजर्स आर एज फॉलो. फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैन बी डन थ्रू एनवायरमेंट एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस. To explain the importance of forests through various competition activities, to improve the scope of work of the forest department, the plantation should be done as fallow land. To form an eco club in the school and do various activities, to give importance to the programs like tree plantation, Van Mahotsav, etc. Of different days of celebration: 21st March World Forest Day, 5th June World Environment Day, 4th October World Wildlife Day, 29th December Biodiversity Day. Wildlife resources. India's wildlife is diverse. Various species of insects and various animals of the world are found in India. There is also a lot of diversity in the species of birds and fishes. Extreme diversity is found in reptiles, mammals, and amphibians.
Kashmiri deers and wild goats are found in Jammu Kashmir and Ladakh. Elephant are found in Uttarakhand, Karnataka, Kerala, Assam. The one-horned rhinoceros is a unique animal of India. It is inhabited in Assam and swampy region of West Bengal. Godukar wild donkey are found in a little run of Kutch and uh, and the adjoining area. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने जो है कंजर्वेशन और रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट उसमें पढ़ाऊँगी। यहाँ तक के चैप्टर को रीड करेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो फील फ्री आस्क मी। ओके, नाउ बाय।